हेलो। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग कोमल। ओके, तो सी इन द लास्ट सेशन व्हाट वी जस्ट स्टार्टेड विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था, बट अगेन ड्यू टू सम इश्यूज कंप्लीट नहीं कर पाए हम पूरा। आई एम फीलिंग बेटर नाउ कंपैरेटिवली। तो फिर अब उस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं दैट वी स्टार्टेड विद, ओके, इन द लास्ट सेशन इटसेल्फ, ग्रीन रिवॉल्यूशन। चलो एक बार रिकॉल कर लो जो कल और परसों में हमने स्टार्ट किया था, डिस्कस किया था। टेक 2 minutes।
Hello. Komal, am I audible? हेलो, सुनाई दे रहा है कोमल? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, थोड़ा नेट यहाँ पे ना लाइट इलेक्ट्रिसिटी डिस्क कनेक्शन का इशू था, तो अब कनेक्ट हो गया है. चलो, सो इन द लास्ट सेशन we just started with agriculture revolutions, and one of the most, in fact, see, revolution, जैसे कल हमने इसका मीनिंग देखा था, revolution is something just within a short period of time, a drastic change in the means and methods. Okay, अब वो means and methods कोई भी sense में हो सकता है. Now over here, if you are talking about agriculture, it means now this a drastic change in the overall agricultural methods, okay, production and output, like within a small period of time. तो अब ये जो रिवोल्यूशन हो सकता है, सो यू विल फाइंड मे बी इन डिफरेंट, इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ मे बी अलाइड एक्टिविटीज इन दैट प्रोडक्शन, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ ए पोल्ट्री, डेयरी और ब्लू रिवोल्यूशन और एनी ऑफ दैट काइंड. ठीक है, तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का ये सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा, जो था ग्रीन रिवोल्यूशन. सो नॉर्मन बोरलॉक, डू यू लाइक से, he started this journey of green revolution way back in 50s and 60s in Mexico, and again again inspired from this journey, okay, of this increased output within a small period of time. MS Swaminathan and the government of India invited him to the to bring about the green revolution over in India as well. तो अब इंडिया की जो बाकी स्टोरी थी हमने कल देख ली थी, वैसे कि लाइक इंडिया वाज यूज्ड टू बी नोन एज शिप टू माउथ इकोनॉमी, बेगिंग बॉल, एंड अगेन दैट लाल बहादुर शास्त्री अपील्ड टू एवरी इंडियन, एवरी सिटीजन टू स्किप मिल like in a week. So that is what the all background of the overall this revolution. Week, in a week, it should be week, WEEK. So see, दिस ग्रीन रिवोल्यूशन, अभी जैसे एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है, ठीक है, तो दैट दिस पर्टिकुलर केस, द होल ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज रादर मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि बीइंग लाइक वन ऑफ द रिनाउंड साइंटिस्ट ओवर ऑन इन द डोमेन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट एम एस स्वामीनाथन पे यूपीएससी GS3 में ऑलरेडी क्वेश्चन वाज लाइक आस्क्ड ड्यूरिंग विच सर विश्वेश्वरैया एंड एम एस स्वामीनाथन, दोनों पर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो अभी भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है ना. सी, पहले तो अभी बाकी इसका ये सारा केस देखेंगे. सो इन 1961 एम एस स्वामीनाथन इनवाइटेड नॉर्मन बोरलॉक, हु सजेस्टेड अ सिमिलर रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर. Green Revolution was introduced with the Intensive Agriculture District Program, IADP, Intensive Agriculture District Program, and Intensive, okay, और एक था Intensive रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि लेटर था, खैर वो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो दिस ग्रीन रिवोल्यूशन इट स्टार्टेड विथ ऑन ए पायलट बेसिस with IADP over in this region. कहां पर? You'll find like 7 districts at least: Jalandhar, Aligarh, Shahabad, Raipur, West Godavari, Tanjavur and Pali. So these are what those 7 districts have been identified during that time, 60, 64, 65, to replicate the
green revolution over on the Indian landscape. What happened during this course? It realized that see Indian landmass or the Indian agriculture is at least adaptive. अडेप्टिव कि वो क्या कर सकती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो कुछ मीन्स और इक्विपमेंट्स होंगे, मेथड्स होंगे, उसको वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकती है. ठीक है. सो दैट वाज समहाउ व्हाट वेरीफाइड. एंड देन इन in the later phase you'll find the overall green revolution was somehow started. अब सबसे पहले जो green revolution का focus था, it was on like that day Kajal has mentioned कि it was basically on high yielding varieties program. ठीक है. तो सबसे पहले जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था, मतलब जो हमने इंट्रोड्यूस किया, इट इज विद द हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट लिमिट योरसेल्फ विद द हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम. इट इज रादर समथिंग that deals with every aspects of agriculture. ठीक है. ऐसे नहीं होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से डील करेगा. इट मस्ट डील विद दी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर. तो फर्स्ट, हाई yielding varieties. अब ये हाई yielding varieties, they are not genetically modified crop, don't get confused. ठीक है. they are not genetically modified crop, they are rather जिसको हम आज के डेट में बोलते हैं ना हाइब्रिड वैरायटीज. हाइब्रिड वैरायटीज. अब पहले ये समझो कि हाइब्रिड वैरायटीज होती क्या है. देखो हाइब्रिड वैरायटीज, हाइब्रिड मतलब कि देखो जैसे ये तो नेचुरल फिनोमेना वैसे क्या है ना कि जो दो क्रॉप्स है एक सेम जीन्स और स्पीशीज के होंगे पॉसिबली. सो दिस क्रॉप्स व्हाट कि इनमें ना कुछ एक डिफरेंट ट्रेट्स है. ट्रेट्स इन ऑन अकाउंट लाइक के कोई एक क्रॉप है या कोई एक पर्टिकुलर सीड्स है जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट है, कोई एक बेसिकली फ्लड रेजिस्टेंट है, कोई एक having better aesthetic look hai. Some crop may be having best efficiency of water use, maybe other crop may be having higher output. तो ऐसे हर किसी crop में ना कुछ एक different traits होते हैं, right? जैसे कि human being, every individual is unique. So on the same count, every crop or every that crop is unique. Now what the case is then, what we have to extract what skill or qualities we want say from that particular crop. अगर हमको चाहिए for example drought resistant, तो हमको ऐसे कुछ हाइब्रिडाइजेशन करना होगा और इंटरमिक्सिंग करनी होगी कि एक क्रॉप में जो ड्राउट रेजिस्टेंट नहीं है उसमें ड्राउट रेजिस्टेंट की स्किल्स ऐड हो जाए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट देयर आर डिफरेंट मींस कि जिसमें पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होगा या मे बी व्हाट और भी उसके डिफरेंट मीन्स है. क्रॉस पॉलिनेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है, इससे कुछ डिफरेंट मीन्स है कि जिसके थ्रू क्या करेंगे द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड ट्रेड बिटवीन टू क्रॉप्स. ओके, लाइक से those will be transfer or addition in the other crop. और जो नई varieties बनेगी इनका combination होके, right? इनकी जो नई varieties बनेगी, this new varieties now will be say having that required trait. आई होप हाइब्रिड का ये जो केस है ये आपको समझ आ गया कि हाइब्रिड में क्या करेंगे, दो या तीन जो भी क्रॉप्स रहेंगे उनकी जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो किसी एक क्रॉप में हम आउटपुट के टर्म में उसको लेंगे. Now, what happened with the wheat during by that Norman Borlaug and later in overall in India? क्या हुआ? You will find in the case of wheat कि wheat का जैसे मैंने बताया था कि wheat का ये जो straw होता है वो लेंदी होता है और जो लेंदी होता है and what this leads to a regular what wind exposure and may lead to damage. What that Borlaug wanted that we should have a dwarf variety of wheat, है ना. डॉर्फ मतलब क्या, जिसकी हाइट कम होगी, तो जिससे क्या होगा कि उसकी जो विंड की ससेप्टिबिलिटी वो भी कम होगी और जो स्टेम है, स्टेम राइट, जो भी इसका ये स्ट्रॉ है, दैट स्ट्रॉ मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ just to sustain even the other or wind related damage further, wind or any other related damage. So what happened then? See, by means of hybridization, he introduced this into a newly developed hybrid variety of wheat. और फिर क्या किया, इसको ट्रांसफर किया, राइट. नोरिन जीन था वैसे, नोरिन जीन इसको क्या किया है से ट्रांसफर्ड एंड देन लेटर developed into a required variety of wheat. And this is how, see, ultimately what happened, क्योंकि जो most destructive reason था for the wind for the wheat production, right, less production, वो ही हमने eliminate कर दिया. And what happened at the end, you will find the result is increase in the output of overall output of wheat, gross output.
Yes, so high yielding varieties are this way. Apart from high yielding varieties, because they are what very specific, क्योंकि ये hybrid है, तो they are not very natural to the potential. So आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ additional cherished means रखने पड़ेंगे. So irrigation facilities much needed, timely irrigation, commercialization of agriculture is needed, क्योंकि वहां पे फिर क्या होगा, commercialization, market orientation होगा, input and investment भी accordingly होगी. Then farm mechanization, that is equally needed, farm mechanization. Then command area development program, CAGP, that is irrigation and related projects hai. Then use of chemical fertilizer much needed at this case. Rural electrification, mechanization, electrification, irrigation, everything that requires electrification जो हमने already discuss कर लिया था. Use of insecticide, pesticides and weedicides. बिकॉज बीइंग हाइब्रिड वैरायटी, ये नेचुरल, मतलब नेचुरल तो है, ऐसे नहीं कि ये हाई ये इननेचुरल है, राइट, बट दैट इज व्हाट लाइक हैविंग लिमिटेशंस, ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी है, सब मॉडर्न डेवलपमेंट वैरायटीज है, तो इसमें क्या होगा ना, यू विल फाइंड रादर मोर वल्नरेबल फॉर एनी अदर टिपिकल टाइप ऑफ डिसीज. तो फिर इसीलिए क्या है, इट रेगुलर नीड्स इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, herbicides and all those things. ठीक है, so these are what the attribute or basis of green revolution. I hope you guys are now pretty much clear with. देखो फिर ग्रीन रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ 3 फेजेस में, या स्टार्ट इन सेंस, स्टार्ट तो एक फेज में पहले हुआ था, देन सेकेंड एंड थर्ड फेज बेसिकली डेवलप्ड इन द फर्स्ट फेज. व्हाट in first phase you will find 65 to 80, the overall production of wheat and or any other product in India is pretty much less. तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, देखो IADP, जिसमें इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हमने ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए एरिया बेस्ड अप्रोच एक्सेप्ट की थी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड थैंक्स टू द फ्रूटफुल रिजल्ट वी लेटर रेप्लिकेटेड दिस ओवरऑल स्ट्रैटेजी इन द रेस्ट ऑफ द इंडिया. सो इन द लेटर फेज 1970s and afterwards, फिर green revolution was implemented all across the country. In second phase 80 से 90 में you will find 80 से 90 में हमने क्या किया, second phase 6th and 7th 5-year plan it was, and what the major focus was on rice. Rice was mainly focused over in this case. Rice was mainly focused during the second phase of green revolution. Third phase is what we try to replicate in the other domain, though ye not fruitful. Replicate in oil seeds, pulses, millets, dry land agriculture. Dry land agriculture 3 phases में था, and keeping different varieties and different regions at target. But see, third phase was somehow miserably unsuccessful, right? कि third phase में कोई बहुत ज्यादा आपको incremental output नहीं मिला. Second phase was to some extent was what better in result, and first stage on that count is highly successful, जिसमें wheat और related production जो था, तो we have achieved a much landmark achievement over in the first phase with respect to green revolution. कि फर्स्ट फेज में जहां पे वीट टारगेट था, और जहां पर से वीट प्रोड्यूसिंग एरिया जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान का कुछ पार्ट, दिस पार्ट्स वेयर फोकस्ड, targeted, and were given high yielding varieties, and at the end see you'll find wheat production has picked up, and this production picked up has led to a differential then strategies further in the domain. तो 3 different stages में green revolution implement हुआ था this way. then देखो अब ये ओवरऑल जो था ग्रीन रिवोल्यूशन का केस है, फाइन. Okay,
सो देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये सारा केस है। कोमल क्लियर है ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? Yes, sir. ओके। तो कुछ कंटेंट लिख लो इस पे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फेजेस पे। बाकी कंटेंट तो पीपीटी में ऐड किया है, कुछ और कंटेंट उसमें लिख लेंगे, फिर आई एक्सप्लेन यू अगेन सम स्टफ। Phases of green revolution. Phases of green revolution. Following the wars, and famines, India was in ardent need. India was in ardent need. ARDENT, ardent need of immediate food supply, of immediate food supply and self-sufficiency in food grain production, and self-sufficiency in food grain production. Self-sufficiency in food grain production. It was successful. It was successful. Green revolution as such was successful in various third world countries. In various third world countries like Mexico, Egypt, etc. Like Mexico, Egypt, etc. It started with its next line में लिखना ये first phase पे. It started with IADP, IADP program on experimental basis. On experimental basis, and later high yielding program during high yielding program during annual plan of 65-66. During annual plan of 65-66. The food production in 50-51. The food production in 50-51 was merely 25 million tons. Was merely 25 million tons empty. And it was 33 million tons in 65-60. 35 million tons in 65-66.
At the end of this phase, it was 100 million tons. It was 100 million tons. Hundred million tons. Three times than 65-66. Than 1965-66. Hence it termed as Green Revolution. Hence it terms as Green Revolution. Next line. This provided India with self-sufficiency. This provided India with self-sufficiency. And improve overall health related indicators. And improved overall health related indicators. Health और बाकी भी सारे. Yes. Phase 2. Phase 2. During 6th and 7th plan. During 6th and 7th plan. Phase 2 देखो 1980 से 91 तक था. ठीक है. 1980 से 91. 10 साल, 11 years almost. During the 6th and 7th plan, wet agriculture, mainly rice was targeted. Wet agriculture, mainly rice was targeted. The regions like West Bengal, Odisha, Bihar, Eastern UP, Assam were targeted. During first phase, rice production was increased. During first phase, rice production was increased. Merely 1.5 times. Merely 1.5 times. Which tried to improve in this second phase, which further tried to improve in the second phase. Next line. The full potential of rice production. The full potential of rice production. Full potential of rice production. However, not realized. However, not realized.
due to institutional factors, due to institutional factors like land reforms, tenancy reforms, etc. Third phase, third phase, 1991, 2003, third phase. In this phase, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वॉज मेनली टारगेटेड. देखो पहले इसमें वीट था, सेकंड में वेट एग्रीकल्चर राइस, और थर्ड में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मेनली टारगेटेड, फोकसिंग ऑन high yielding varieties of HYVs, of cotton, oilseeds, pulses, millet, etc. Integrated watershed management program. Integrated watershed management program was initiated to improve the conditions in subhumid and semi-arid regions of India. Subhumid and semi-arid regions of India. But it was mainly successful in, next line, but it was mainly successful in Bhima Krishna Basin, Tungabhadra Basin, Narmada Tapi Basin. ठीक है, तो ये देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन की फेजेस की इंफॉर्मेशन थी जो हमने लिखी है. ये यू विल लेटर ड्रॉ दिस ग्राफ एज वेल रिफ्लेक्टिंग the phases of the green revolution and their impact further on. Now what, अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो आप इसमें लिख लोगे, मैं कुछ आपको कंटेंट एडिशनली दे दूंगा. ग्रीन रिवॉल्यूशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस तो देखो नो डाउट इट हैज surged or it has promoted the overall output in India, wheat, rice और बाकी कुछ चीजों में. Then farming activity productive बना दी. Then you will find कि न्यू टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, फार्म मैकेनाइजेशन इंप्रूव्ड हो गया इंडिया में जो पहले से बेटर था, अनएम्प्लॉयमेंट कुछ हद तक हमारे पास कम हो गया होगा, राइट. देन I'll find say इकोनॉमिक और सोशल बैलेंस कुछ हद तक के मैनेज हो गया. द रीजन बीइंग कि अब व्हाट एनहांस प्रोडक्टिविटी इज देयर, एनहांस्ड इनकम इज देयर, मोर एम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट टू ऑल. दिस इज व्हाट लाइक आर्गुमेंट्स इन फेवर. हाउएवर देखो इसके जितने ज्यादा फेवरेबल आर्गुमेंट है उससे ज्यादा फेवरेबल इसके व्हाट अगेंस्ट वाले फैक्टर्स है. ठीक है, फेवरेबल इन द सेंस के इससे बहुत ज्यादा counter argument strong of the green revolution. The reason being
The reason being, see, Green Revolution is rather, agar Vandana Shiva, right? She has written a book titled The Violence of Green Revolution. ये नाम से ही उन्होंने बुक लिखी है. And you will find कि this title itself explains about how this green revolution has led to a violence on soil and environment. Yeah, it's like, अगर और भी थोड़े rigid terms में बोले हम, तो it's like a rape on the mother earth. This green revolution is like, because green revolution has led to many irreversible damages, or like on the earth's surface or to the soil. लाइक फॉर एग्जाम्पल कैसे है, देखो इसने क्या किया, हाइल्डिंग वराइटीज ली, जिससे हमको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन, राइट. अब इरिगेशन से क्या हुआ, इरिगेशन के वाटर, एक तो आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहां पे डैमेज हो रहा है. देन ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन हो रहा है, वहां पर फिर से डैमेज हो रहा है. सॉइल सैलिनाइजेशन हो रहा है, वो प्रॉब्लम है. यूट्रोफिकेशन इज अगेन इक्वली प्रॉब्लम. केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, व्हाट इट फर्दर लीड्स टू ए बायो एक्युमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, सॉइल सैलिनाइजेशन, और जिससे कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो गए इन द ह्यूमन हेल्थ एंड इवन एनिमल्स एज वेल. अपार्ट फ्रॉम this green revolution was highly crop specific. ग्रीन रिवोल्यूशन ये क्रॉप स्पेसिफिक थी. कैसे है, इसने प्रमोट किया मेनली व्हीट प्रोडक्शन. अगर ग्रीन रिवोल्यूशन अगर ट्रू सेंस में देखें हम, सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में हुआ, तो व्हीट में. सबसे ज्यादा कौन से रीजन में हुआ, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी. देन सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी को हुआ, तो लार्ज फार्मर. मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स वेर समहाउ neglected over in the green revolution and the overall approach. And what, see, you will find at the end, see, this green revolution was somehow, okay, it was somehow not leading to, it may have improved quantitative aspects of India's food production, but in the long run, इसलिए फिर से एक अगर मिलेट वाला केस देखोगे, जैसे मैंने तब भी बताया था, that millet has somehow, neglected, and due to which wheat has now become a staple crop in India, राइट. कि जैसे पहले पंजाब, हरियाणा या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलेट्स वेर मच कॉमन, बाजरा, जवार, ये यहाँ के एंडेमिक क्रॉप्स हैं. यहाँ पे सीजन वाइज ये बेस्ट फूड है. बट क्या हुआ, जैसे हमने ग्रीन रिवोल्यूशन में से व्हीट को प्रमोट किया, तो हमारा फूड डाइट भी चेंज हो गया. डाइट चेंज हो गया जो कि एनवायरमेंट के साथ कंपैटिबल नहीं था. यू विल फाइंड कि उस वजह से इंपैक्ट होने लग गया on the overall, okay, on the overall health of human and even animal life as well, है ना. तो इसके बहुत ज्यादा डायर कॉन्सिक्वेंसेस थे that you will find or you will note them. चलो इस पे कुछ लाइन लिख लेना आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट में, जो कि मैं बुक का रेफरेंस दे रहा हूं आपको. बाकी ये तो लिख ही लोगे, ओके, दिस वन.
सर आवाज नहीं आ रही है। Am I audible? यस सर। अच्छा, इसके पहले कुछ लिखा है फिर आपने, कोमल? वंदना शिवा के बुक पे कुछ वो लिखा या नहीं? नहीं सर, वो मैं वीडियो रिपीट करके लिख लूंगा, लेकिन उसमें भी अच्छा नहीं चलो, आएगा। अभी क्या? अच्छा ठीक है, देखो कंटेंट में ये लिख रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वैसे ये सारा हम आर्गुमेंट अगेंस्ट पहले लिख लेंगे, उसके बाद ये कंटेंट जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेंगे, ठीक? इन हर बुक द वायलेंस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, कैपिटल लेटर्स, वंदना शिवा has criticized blatantly the biotechnological modifications of the agriculture. According to her, the application of tools of green revolution, according to her, the applications of tools of green revolution like fertilizers, pesticides, excessive irrigation means are like rape on the mother earth, like rape on the mother earth. It has snatched, snatched the very natural productive potential of the soil and resources. It has snatched the very natural productive potential of the soil and resources, and lead to lead to widening of socio-economic disparity as well, and lead to widening of socio-economic disparity as well. ठीक है, तो ये कुछ लाइंस जिसमें क्या है, हम आंसर राइटिंग करेंगे तो ऐसे कुछ बुक्स का रेफरेंस या ऑथर का रेफरेंस हो तो दैट वुड बी मच अप्रिशिएटेड। अब देखो इसी के अगेंस्ट में एक और जो केस स्टडी हमारे पास, तो ये है कैंसर ट्रेन, द शॉकिंग टेल ऑफ इंडियाज कैंसर ट्रेन। देखो क्या कैंसर ट्रेन की केस स्टडी है, एक बार गो थ्रू करना इस कंटेंट पे। देखो दिस इज अगेन an unexpected outcome of the green revolution, हाईली अनएक्सपेक्टेड आउटकम, कि इसने कैंसर के पेशेंट्स बढ़ा दिए। ऑल पंजाब हरियाणा का भी केस है, बट इवन ऑल अक्रॉस इंडिया एज वेल। ठीक है, तो ये थी कैंसर ट्रेंड केस स्टडी जिसकी। तो बाकी आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सारे इसके निगेटिव्स या प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने इसमें ऐड किए। तो देखो ये सारा केस था अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन।
ओके चलो, तो ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड देखो इसका कंक्लूजन. द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फूड सफिशिएंसी फॉर द कंट्री. द गोल हैज बीन अचीव्ड. This it requires sustainable agriculture pattern. Also, much wider could be thought under the Green Revolution, and instead of Green Revolution, it can be transformed into Evergreen Revolution. इट मीन्स कि हमको सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन तक के नहीं सोचना है, हमको एवरग्रीन रिवॉल्यूशन सोचना है. एवरग्रीन इन द सेंस कि जिसमें सारे क्रॉप्स कवर हो जाए, कॉटन, ऑयल सीड, पल्सेस, मिलेट्स, राइस और सारे जो फूड क्रॉप्स है हमारे, सारे रीजन्स कवर हो जाए. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सारे कुछ रीजन्स, राइट. फ्रूट्स भी कवर हो जाए, सारे कुछ चीजें. एंड नॉट ओनली क्रॉप एंड नॉट ओनली रीजन, इट शुड इक्वली कंसिडर all communities in a sense women, and in a sense small and marginal farmers, and in a sense say poor and laborer class as well. तो सारे लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, सारे क्रॉप्स को बेनिफिट होना चाहिए, सारे रीजन्स को बेनिफिट होना चाहिए. दैट शुड बी व्हाट इट राइटली टर्म्ड एज देन एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन. ओके, तो ये कंक्लूजन में आप आंसर के ऐसे कर सकते हो कि जिससे क्या होगा, आंसर आपका मच इंप्रेसिव होगा. ठीक है, सो दिस कंक्लूजन. नेक्स्ट कुछ आज देख लेते हैं जितना भी होगा उसमें. जेनेटिकल क्रॉप तो खैर इसका है नहीं. व्हाइट रिवॉल्यूशन. व्हाइट रिवॉल्यूशन देखो, जस्ट लाइक ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज in the agriculture, okay, cropping production, white revolution was like in an allied activity, okay, like it is in allied activity. And this allied activity are like mainly in the dairy and related products. So the package program adapted to increase the production of milk is known as white revolution, like that is what. And it is also known as operation flood, okay, flood of milk, that is what. So it was envisaged at operation flood. अब इसकी जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन ने इनिशिएट की थी, वैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन वाज बाय डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन. ठीक है, सो वर्गीस क्यूरियन 1921 से 2012, इनकी भी डेथ हुई थी 2012 में. तो इस पे भी क्वेश्चन रिलेटेड था ही एग्जाम में, और जैसे स्वामीनाथन की हुई है तो that way equally. So Verghese Kurian, who is considered as the father of white revolution in India, was one of the world's great agricultural leaders of the 20th century. That this Verghese Kurian, he himself, right, he was not like he used to dislike the milk, but what कि जब ओवरऑल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन की बात आई, लाइक फॉर द केस ऑफ कंट्री एंड रिलेटेड अफेयर, सो ही वाज एट द फोरफ्रंट, राइट. तो फिर उन्होंने फिर क्या किया, ऑपरेशन फ्लड नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. अमूल, रखिए अमूल जो था वो सेम नाम से नहीं था, बट इन द गुजरात, द स्टेट ऑफ गुजरात, आनंद मिल्क यूनियन Association. So the white revolution in India occurred in 1970 when the National Dairy Development Board NDDB was established to organize dairy development through cooperative societies. See, अब एग्रीकल्चर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था ये इंडिविजुअल फार्मर स्पेसिफिक था, दो गवर्नमेंट वाज सपोज टू, बट यहाँ पर क्या है, मिल्क जो है इट वाज सपोज टू चैनलाइज, or this white revolution was supposed to channelize by means of cooperative societies. तो cooperative societies के चैनल के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, इसको डिस्पर्स करेंगे इन दी डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ दी कंट्री. अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. What are the objectives of it? The main objective of the cooperative societies are like the procurement, transportation, storage, and like that of the milk at a chilling plants. तो cooperatives का जो रोल आने वाला था, cooperatives का क्या था, क्योंकि उनके पास already established network है, so they will rather help us to collect milk, then store it, transport it further, and accordingly can manage. Then you'll find to provide like cattle feed. देखो again white revolution है, so it is not only about the output, increase in output of milk. It should deal with the very first point of milk production till the last point of milk production. तो ये सारी जब कुछ चीजें करेंगे तब क्या होगा, overall, you know, overall the balance of the wheat output, the production of wide varieties of milk products and their marketing management. Next, the societies also provide superior breeds of cattle, health services, veterinary and artificial insemination facilities.
to provide extension services. Extension मतलब advisory, okay, help के like say if my cattle is about having say this kind of symptoms, तो क्या disease हो सकता है, या फिर मैंने अगर मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैंने क्या करना चाहिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो कितने टेम्परेचर पे करना चाहिए, ये सारी कुछ चीजें जो है ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटेंशन सर्विसेज. सो we'll find extension service provision to the dairy farmers. Then the technology of the white revolution is based on an extensive system of cooperative mechanism. See, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस्ड होगा cooperative society, because cooperative societies are at the very base, at the very root of this development of व्हाइट रिवोल्यूशन. ओके, तो जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का इक्वल रोल नहीं देखा था, यहाँ पे हम उसको रिपीटेटिवली एम्फेसिस करेंगे. अब देखो इसकी चेन या साइकिल क्या है ऑफ दिस ओवरऑल व्हीट सॉरी डेयरी मिल्क प्रोडक्शन. पहले तो क्या होगा, मिल्क प्रोड्यूसर मिल्क प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम इट्स बेस, right? Generally women are preferred to be. Then you will find village dairy cooperative societies that will engage, okay, or ensure this procurement of this milk. Then डिस्ट्रिक्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होगा, इसका फर्दर मैनेजमेंट होगा, या जो भी इसके रिफाइनिंग और जो भी स्टोरेज है. इन द नेक्स्ट स्टेज स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, एंड एट द एंड द कंज्यूमर स्टेज. द कंज्यूमर स्टेज यू विल फाइंड इस स्टेज पे क्या होगा, सी दिस मिल्क प्रोडक्शन विल बी एंश्योर्ड. So cooperative societies will rather play a role at every level, village, district, state, and at the even consumer supply level. क्या करेगी cooperative society, इसको help करेगी just to ensure the better reach, just to ensure the timely supply. Then the phases of the white revolution, जैसे green revolution के phases देखे थे, वैसे white revolution के phases. White revolution, see, it can be examined under these three phases, कि जिसमें क्या हुआ 1970 से 71 हमने क्या किया, we were like getting much serious about the overall dairy production के overall ultimately India वैसे तो अभी even at this moment of time India is the largest producer of milk. However, the per capita income, per capita milk supply in India is very poor. तो फिर the focus was on how to improve the per capita milk supply. Then there was a dairy development program that was initiated. Dairy development program, इसमें क्या करेंगे हम, dairy development program was simply the program with intended, okay, intended benefits like for कि जिसमें से डेयरी रिलेटेड जो भी कुछ व्हाट एरियाज है, ओके, वी आर सपोज टू एड्रेस देम. लाइक फॉर एग्जांपल कैटल ब्रीड, ओके, देयर क्वालिटी, फूड मिल्क प्रोडक्शन किस टेक्निक से करना है, देन उसके बाद उसको स्टोरेज कैसे करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी कंज्यूम मार्केटिंग कैसे करनी है, हर किसी एरियाज में जो हम डील कर सकते हैं. सो दिस डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज ट्राइंग टू डील विद. In the over here, NDDB, National Dairy Development Board was established as well. National Dairy Development Board, जो ये board क्या करेगा, overlook करेगा the activities of the dairy development program and related things. ठीक है, तो ये in phase 2 you will find what 81 से 85 small time duration का था, but इसमें फिर हमने क्या किया, overall cooperatives were supposed to get involved in. ठीक है, सेकेंड फेज में क्या था, कॉपरेटिव्स को हमने इन्वॉल्व कर लिया इन दी डेवलपमेंट ऑफ दिस डेयरी और मिल्क प्रोडक्शन. And what happened, the milk production due to this cooperatives, you'll find it has rised at a very huge rate. Okay, इसका जो अभी देखेंगे इसमें हम ईयर वाइज प्रोडक्शन. एंड इन द नेक्स्ट थर्ड फेज 85 से 2000 जहां पे फिर ओवरऑल इसका डेवलपमेंट कीपिंग टेक्नोलॉजी एट द हेल्प से वाज एंश्योर्ड. तो देखो अब जैसे 1951 में इंडिया में ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन था 17, पर कैपिटा था 124 मिलीग्राम अवेलेबिलिटी पर इंडिविजुअल.
इन 60 70 71 जब ये स्टार्ट होने वाला था, इट वाज 22 मिलियन टन्स, ओके, और पर कैपिटा वाज 128. What happened at the end of the first phase, 80-81, it was 31 million tons. 1991 it was 54 million tons. ठीक है, 54 million ton, देखो राइज हो गया. Then 2000 it was 80 million ton, and you will find by 2009-10 112 million ton. देखो एक केस है, अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन देखोगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ. ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले तो इमीडिएट राइज दे गया, पर बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज समहाउ अनसक्सेसफुल सेकंड फेज और थर्ड फेज में. व्हीट रिवॉल्यूशन अगर देखोगे, सॉरी व्हाइट रिवॉल्यूशन, माय मिस्टेक, व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो यू विल फाइंड कि फर्स्ट फेज इसकी स्लो थी, सेकेंड फेज पिक वो इंक्रीज होती गई, और थर्ड फेज यू विल फाइंड इट इज एट द हाईएस्ट पिक. और इस वजह से ना व्हाइट रिवॉल्यूशन वाज समहाउ मोर सस्टेनेबल. White revolution, it won't lead to, or it hasn't led to any significant negative impact on environment, health or any other thing. इन्होंने क्या किया ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन में डिफरेंस क्या था. व्हाइट रिवॉल्यूशन ने क्या किया, जो नेचुरल मीन्स है बस उसको प्रॉपर अलाइन कर दिए. ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने पूरा नेचर के अंदर जाकर चेंज करने की कोशिश किया, नेचुरल जो मीन्स थे, और वो भी कम टाइम ड्यूरेशन में. सो द रिजल्ट वाज, नो डाउट यू हैव ए सडन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, बट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स. So that is what a brief difference between white revolution and green revolution. So see, देखो यहाँ पे incremental production है, and production has somehow increased in the second and third phase. Then it is an outcome based on the improvement in the cattle breeding and the adoption of new technology. So सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन से हम इसको नहीं देखेंगे, तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि ओवरऑल आउटकम कितना इंप्रूव्ड हुआ है ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ कैटल फीड्स एज वेल, ओके, एंड देन टेक्नोलॉजी का यूज. सो टुडे इंडिया हैज एंटर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज थैंक्स टू द white revolution, thanks to the Dr. Verghese Kurian and his team further, जिन्होंने इसको फिर impact किया, the sound impact on the rural masses and encourage them to take up dairying as a subsidiary occupation. India has become the leading producer of milk in the world, right? तो this one per capita availability हमारी 263 ग्राम्स है आज, जो कभी 125 ग्राम्स हुआ करती थी 1950s में. तो पॉपुलेशन तो हमारी इंक्रीज हो गई है, बट साइमल्टेनियसली मिल्क का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, and the import of milk and milk production has been reduced substantially. So this is what this case. अब इसमें एक प्रॉब्लम वैसे है adulteration, कि जो मिल्क और रिलेटेड adulterations होते हैं ना, कि जैसे इसमें कुछ अडल्टर फूड से मिल्क बनाया जाता है, जबकि दैट इज एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी, राइट. इससे तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, बट ये भी एक इसका प्रॉब्लम एंड कंसर्न है अबाउट दिस केस. सो some of the problems and like prospect, the important problem with the white revolution, like collection of milk from remote areas is expensive, because see farmer, he is not having his own means at disposal. So what you'll find, ही इज रैदर लुकिंग फॉर कि कोई मेरे पॉइंट से आके सब कुछ चीजें कलेक्ट कर ले, सारी कुछ चीजें. तो अब ऐसे केस में ऐसे वॉट एवर दैट मिल्क कोऑपरेटिव बॉडी और दैट विलेज बॉडी, सो इट हैज टू बी रिमेन एक्टिव, इट नीड्स टू एंगेज लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्दर. और जो एक इसका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, एक्सपेंसिव it is, time consuming it is, and not viable economically as well. Second, in most of the villages the cattles are kept under unhygienic conditions. अब unhygienic conditions होगा तो क्या होगा इसका impact, के रिजल्ट जो होगा वो भी अनहाइजीनिक हो सकता है, तो फिर वो डिफरेंट क्वालिटी के मिल्स लीडिंग टू प्रॉब्लम. देन देयर आर inadequate marketing facilities. The marketing infrastructure needs much improvement. So marketing related infrastructures need much improvement as well. That way the breeds of cattle are generally inferior, जो कि हम जो जनरली जो लो inferior, क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, फार्मर्स क्या देखेगा कि cattles are kept for the purpose, no doubt for the milk, but equally for the purpose of farm activities, कि ऐसा भी हो कि farm activities का भी help करे और simultaneously ये जो farm daily related activities है उसको भी fulfill करे. So on that count, this is the way, and the extension service program is not effective. Okay, it is not effective over in this white revolution. ये कुछ प्रॉब्लम्स है, बट बिलीव मी ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर डीलेबल. ऐसे नहीं है कि जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जो इसके इंपैक्ट्स डाले हैं उस कंपैरिजन में, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कैन बी डीलेबल एंड एट द बेस्ट पॉसिबल वे, राइट. तो बहुत ज्यादा कुछ इश्यूज के साथ अटैच्ड नहीं है.
आई होप ये भी क्लियर है. व्हाइट रिवॉल्यूशन, कोमल, यस सर। ना? ठीक है. देखो नेक्स्ट है ब्लू रिवॉल्यूशन. अभी कलर से रिवॉल्यूशन होते हैं जनरली, और कलर के रिवॉल्यूशन इन सेंस कि कुछ रिफ्लेक्ट करता है. तो ब्लू रिवॉल्यूशन दैट सिंपली मींस रिलेटेड विद द मैरीन प्रोडक्ट्स और लाइक ए फिशरीज एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स मोर अप्रोप्रिएटली. सो ब्लू रिवॉल्यूशन. अब देखो ब्लू रिवॉल्यूशन का क्या केस है. Blue revolution means the adoption of a package program to increase the production of fish and marine products. Okay, so fish and marine products. Fish और marine products में क्या आएंगे? You'll find fish है, you'll find prawns है, you'll find then again उसके बाकी जो small fish stocks है, या even you will find many. अब वैसे इंडिया में तो अलाउड नहीं है, पर sharks and related products है, या और भी कुछ seaweeds है. ये सीवीड्स है. तो ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स है, इनका प्रोडक्शन जो आएगा that is what under the blue revolution. So the objective of blue revolution is what? To increase the overall fish production in the in responsible and sustainable manner for economic prosperity. पहला तो ऑब्जेक्टिव यही होगा उसमें. सेकंड वाला केस क्या है? वी आर इक्वली लुकिंग फॉर ए मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल यूज ओवर इन द फिशरीज. जिस वजह से देखो अभी जैसे कच्छातीवी आइलैंड पे डिस्प्यूट चल रहा है ना, दैट कच्छातीवी आइलैंड के वन ऑफ द रीजन इज व्हाट कि इंडियन फिशरमैन एंटर्स इनटू द डोमेन ऑफ दैट कच्छातीवी आइलैंड, जो कि ईज ऑफ ए श्रीलंका. तो इस वजह से फिर क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. तो अगर हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, मॉडर्न मींस होगी और सस्टेनेबल अप्रोच होगी, तो क्या होगा ना, ये जो डिस्प्यूट्स है, अननेसेसरी डिस्प्यूट्स है, दोस जस्ट कुड बी डील्ड विद. देन टू एंश्योर न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी, क्योंकि अगेन इफ यू रिमेंबर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. सो to ensure nutritional and food security, this case is equally इंपॉर्टेंट. तो हमको फिश के थ्रू जो अब जो देखो वेजिटेरियन जो है उनके लिए मिल्क के थ्रू प्रोटीन तो दे रहे हैं हम, राइट, मिल्क के थ्रू. बट जो अगेन नॉन वेजिटेरियन है ना, उनके लिए भी हमको कुछ फिशिंग के फिशरीज के थ्रू, बिकॉज फिशेस आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है या प्रोटीन्स है एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है. तो इस वजह से इस पे भी फोकस करना है. न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड ensure inclusive development at the end. So these are what the objectives of the blue revolution in India. Then when this blue revolution was started, the blue revolution was started like way back in the 7th 5-year plan. तब तक देखो ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, सेकंड फेज चल रही थी इसकी. व्हाइट रिवोल्यूशन की भी सेकंड फेज चल रही थी इस टाइम पे. अब उसके बाद ये हमको नीड रियलाइज हुई दैट वी शुड हैव ए रिवोल्यूशन और चेंज इन द ओवरऑल प्रोडक्शन अप्रोच फॉर द फिश एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स एज वेल. तो इस वे से फिर हमने क्या किया, एक 8 5-year प्लान, 7th and 8th 5-year प्लान में से ब्लू रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया. एंड यू विल फाइंड, देखो ओवरऑल अगर इसका आउटपुट देखना है तो क्या होगा, मेरीन फिश. देखो वैसे हमारे पास इनलैंड फिशरीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है आज के डेट में, और मेरीन फिश, दो टाइप के फिश रहेंगे. यू गाइस मस्ट बी अवेयर अबाउट इनलैंड एंड मेरीन फ्रेश वाटर. तो 1951 में हमारा मेरीन फिश ज्यादा था, इनलैंड फिश कम था. ओवरऑल इतनी अमाउंट थी. बाय द एंड ऑफ 1990 23 मेरीन फिश हो गया, इनलैंड 15 हो गया. 2028 slow growth over in the marine, but a incremental growth in the inland fisheries. In 2010-11 30 and 48 million tons. So you will find a steep rise in the overall production, a steep rise in the overall production of fish production in the last कितने hardly 10 to 15 years of this project. So the visible aspects are so clearly identified of this fish revolution. अब इसमें क्या था, see, जैसे इसके tangible achievements अगर देखना है तो नेल्लोर, that is in the Andhra Pradesh, is now recognized as the shrimp is again a type of fish itself. तो shrimp capital of India, जिस पे भी 8 या 10 दिन पहले कुछ आर्टिकल भी था न्यूज़पेपर में. And now India is largest exporter of shrimp to the US. तो ये एक, हाँ, इसके ऊपर करंट अफेयर का इशू ये था कि वहां पे कुछ ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया था नेल्लोर के फिशिंग प्रैक्टिसेस पे और जो मैनेजमेंट हो रहा है उस पे. तो दैट वाज आर्टिकल इन द न्यूज. इट इज नोन एज श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया, दिस नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा. 5 points, India has emerged as one of the world's largest
shrimp exporter, and its share in the US market has risen from 21% or 1.3 billion to 40% in 2022-23, with shipments worth 2.4 billion, far ahead of the rivals such as Thailand, China, Vietnam, Cambodia, and other countries. So India is one of the largest exporter of shrimps in the world. So thanks to the fish revolution या blue revolution, you will find it has led to, और इसे इसके केस में नहीं है, you will find further again connected with this case. Now अब इसके कुछ देखो, कुछ क्या कहते हैं इसको, ऑब्जर्वेशंस है या जनरल पॉइंट्स है. इनलैंड फिशरीज मोर है हमारे पास देन मरीन फिशरीज, है ना. पहले रिवर्स होता था 50-51 में, मरीन फिशरीज होता एट द हाई एंड एंड inland fisheries was comparatively less practiced. But what happened later? The case was reversed. About 65% of the overall country's fish production is from inland fisheries. अब देखो inland fisheries कहाँ से होती है कोमल? inland fisheries होगी रिवर से, inland fisheries होगी लेक से, inland fisheries होगी तालाब से या फिश पॉन्ड से या वेल से, है ना. वेल से नहीं होगी, बट जहां पर भी अगर इंटेंशनली अगर फिश सीड्स हमने ऐड किए तब. तो इनलैंड फिशरीज मतलब क्या है कि जो इन डीप इंटीरियर ऑफ द लैंड होगी, और मेरीन फिशरीज मतलब जो कोस्टल एरियाज पे होगी, जो कोस्टल एरियाज पे जहां पे हम कोस्टल रीजन्स पे या कोस्टल बाउंड्रीज पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सी में, राइट, दैट इज व्हाट कोस्टल फिशरीज. तो इंडिया में इनलैंड फिशरीज ज्यादा है देन कोस्टल फिशरीज. Then Kerala is the leading producer, followed by Maharashtra, Karnataka, Gujarat, and Goa. Kerala, that is the leading producer of this case, mainly marine fisheries. Then the fishing season extends from September to March. September to March, that is what again, जहां पे monsoon rainfall recede हो जाएगा और यहीं पर ये practice start होगी. This one. Then the higher food production in the Arabian Sea is due to the broader continental shelf there. तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कंपेयर करोगे तो अरेबियन सी इज रादर हैविंग मच फिशिंग प्रोडक्शन ड्यू टू, क्योंकि कंटिनेंटल शेल ज्यादा है तो क्या फिशिंग एक्टिविटी इसकी इजी हो जाएगी कंपैरेटिवली. एंड द ईस्ट कोस्ट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 28% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मैरीन फिश इन द कंट्री, एंड वेस्ट कोस्ट दस ऑलमोस्ट 72%. तो ये देखो कुछ फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस है अबाउट दिस वे. सो व्हाइल राइटिंग आंसर यू गाइस कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैम. सो फिश प्रोडक्शन परसेंटेज अभी ये आपको खैर पीपीटी जब दूंगा तब दिख जाएगा, अभी इतना विजिबल है नहीं आई थिंक. तो मेजर देखो, मेजर फिश प्रोड्यूसिंग सेंटर है हमारा ये जो कोस्टल मेरीन फिशरीज में आएंगे, और ये जो इसमें इनलैंड फिशरीज की भी पार्ट्स आएंगे. देखो इस वाले में इनलैंड फिशरीज भी रहेंगे ओवर इन दी रीजन. यू कैन टेक दिस मैप फर्दर फ्रॉम द गूगल, तो गूगल से भी और आपको बेटर हो सकता है दिस फिशरीज वाला केस. देन स्ट्रैटेजीज क्या थी ऑफ द फिश प्रोडक्शन फिशिंग या ब्लू रिवोल्यूशन के लिए? The ICAR, Indian Council of Agriculture Research, has established 8 fisheries research institutes, refrigeration and cold storage facilities. Okay, cold storage क्योंकि फिशिंग के लिए चाहिए, फिशिंग और रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए. ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर फिशरमैन, फिशरमैन आर नोन एज फिश फार्मर्स. यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ फिशरमैन फिश फार्मर्स भी यूज कर सकते हो, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ मेरीन प्रोडक्ट्स यूज कर रही है, या मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी, हाँ यही एनवायरमेंट वाली भी, और इवन दैट ओशनोग्राफिक स्टडी भी. So fishing from a dock has been established. ICAR has established 4 to 1 to district level fish farm. देखो ये सारे initiatives लिए again to ensure this thing. Village panchayats have been authorized to carry out the fish development programs. Development model of fishermen villages, brackish fish farmers development agency, and insurance facilities for the farmers, okay, or this fish farmers. Okay, so this is what, okay, these are the strategies कि जिससे हम क्या करेंगे. देखो जब अल्टीमेटली जैसे हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है तो हमको कुछ उनको रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी होगी, सीड्स देने पड़ेंगे, फंडिंग देनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट है, मैकेनाइजेशन है, बैंकिंग फिनेंस है, एंड दोज वे. सेम गोज विद द फिशरमैन एज वेल. दे मस्ट बी गिवन विद सम security in a sense insurance, then research, fish farms, fishermen villages, training, and all those aspects जिससे क्या होगा, fishing would rather increased in the country. अब गवर्नमेंट ने recently government has started a new
गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट नाउ ब्लू रिवोल्यूशन 2.0. ठीक है, ब्लू रिवोल्यूशन 2.0. 2.0 मतलब क्या है, अभी सेकंड फेज में जा रहे हैं हम ब्लू रिवोल्यूशन के. एंड दैट इज व्हाट अंडर द नेम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, under which 20,000 crores for fishermen through Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana have been disbursed or decided to disburse. जिसमें फिर क्या होगा, कुछ वेरियस से इनिशिएटिव्स दिए जाएंगे, जैसे यू विल फाइंड 11,000 crore for activities in marine and inland fisheries for agriculture. Government will again provide you the best quality fish seeds. Then you will find various trainings and equipment mechanism जो दिए जाएंगे under this blue revolution 2 point scheme. Then you will find a price support mechanism. Additional fish production of above 70 lakh fisheries over 5 lakh years. राइट, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है अंडर दिस ब्लू रिवोल्यूशन 2.0, सो दैट ओवरऑल इंडिया में अब नेक्स्ट फेज ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन वुड बी स्टार्टेड. ओके, अगर इस पे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनफैक्ट व्हाट यू शुड लुक फॉर दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आई गेस ये आपको विजिबल होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो, एक बार इसको देख लेना, मैंने वैसे ऐड कर लूंगा एक बेटर इमेज. तो दिस वन इज व्हाट you have to look for, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. पीपीटी एनीवे विल बी शेयर्ड विद यू, तो वहां से आपको क्या होगी, इसकी एक बेटर आइडिया लग जाएगी. देन प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट एक बार गो थ्रू करना इस कंटेंट पे. तो कोमल देखो, ये था विद द ब्लू रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन. अभी कुछ पॉइंट्स वैसे बचते हैं बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट तो देख लिया हमने. जैसे सीरीकल्चर इन इंडिया, ठीक, एपीकल्चर, दो वाले चीज है. तो आई थिंक यू गाइस शुड लाइक गो थ्रू ऑन योर ओन. ये मैं इसके साथ में मैं आपको पीपीटी सुबह से शेयर कर ही दूंगा. तो क्या है, देन अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगता है, ये इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स है, थोड़े फैक्चुअल भी है, वैसे कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की स्कोप नहीं है. तो व्हाट उसके बाद में अगर आप गो थ्रू करना, एंड इफ यू फाइंड कि कुछ फिर भी टॉपिक्स क्लियर नहीं हो रहा है, राइट, तो यू कैन आस्क मी, तो मैं आपको फिर से वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ. दो ही बचते अभी, वो भी दो दो चार चार पेज की स्लाइड्स है उसमें, वैसे भी एपीकल्चर और सेरिकल्चर इन इंडिया. हो जाएगा, ओके सर. हो जाएगा ना. ये तीन जो रिवोल्यूशन थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने डील कर दिए. बाकी ये जो रिवोल्यूशन है एक बार इसको देख लेना. ओके चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. वी आर नाउ डन विद द रिवोल्यूशन वाला पार्ट है. तो इसको फिर हम कल बाकी फिर क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स होगा और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स होगा. एक बार गो थ्रू करना उस वजह से. अगर प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क मी देन. थैंक यू गाइज, ऑल यू वाचिंग रिकॉर्डिंग as well, and have a good time. Having a nice day, sir. Thank you, thank you.